Hello everyone, welcome back to my channel RN ArchiVision. So today is the next lesson of the AutoCAD software, and today it's going to be a very short video, and जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी how to create the double door for this balcony area. So हम quickly create करते हैं the double door. So let's see how to create the double door. यहाँ बालकनी में भी we do have a door, right? So इसमें हम क्या करते हैं? We're gonna do one thing. यहाँ पर again we're gonna make a polyline, and I'm gonna quickly create a door. अगर आपने मेरी door की वीडियो नहीं देखी है किस तरह से बनाया है तो प्लीज टू टेक अ लुक. मैं यहाँ पर quickly बनाकर आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर door किस तरह से बनाया है. ठीक है? Now let's get started with that. चलो. ठीक है, so मैंने यहाँ पर डोर ओपनिंग बना ली है इसके लिए. Now what I need to do is I need this particular to be as similar to that of this particular wall. इसके लिए मैं क्या करूँगी? I won't be like individually selecting it. मैं यहाँ पर tool use करूँगी match tool, and I'm going to select this one and I'm going to match this up. And next let's take a look over how to create a double door. हम देखेंगे step by step of how I am going to create this double door. ठीक है, so let's get started making the double door. So इसमें मैं क्या करूँगी? I'm going to use this particular door जो मैंने already create किया है over here. And if you haven't seen the video, I would personally recommend you to go watch it before watching this double door video. ठीक है? अभी इसमें मैं क्या करूँगी? This is a block. अगर मैं इसी में edit करूँगी तो ये सारे रूमों की editing हो जाएगी. So I'm not going to do that mistake. What I'm going to do is I'm going to select this door and I'm going to explode it. ठीक है, एक्सप्लोड. तो इसमें क्या होगा? वापस जिस तरह से पहले था वो वैसे ही हो गया. ठीक है, एंड नाउ इसमें व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पर्टिकुलर एरिया एंड देन गोइंग टू सेलेक्ट द टॉप टू. ठीक है, एंड गोइंग टू मिरर दिस, और इसमें आई एम गोइंग टू प्लेस इट राइट ओवर हियर. एंड या इस तरह से मैंने क्रिएट कर दिया है मैंने, और इसी तरह कॉपी करके यहाँ से आई एम गोइंग टू मूव फ्रॉम दिस पार्ट एंड अटैच इट राइट ओवर हियर. तो इस तरह से मेरा ये डबल डोर रेडी हो गया है. ठीक है, एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू कम अंडर द सेक्शन ऑफ डोर्स. ठीक है, और या दैट इज परफेक्टली क्रिएटेड. और इसमें मैं क्या करूँगी? इस पूरे कंप्लीट को मैं ब्लॉक बनाऊंगी. ओके, क्विकली ब्लॉक बना दूंगी. ओके, एंड यहाँ पर आई एम गोइंग टू गिव द नेम डबल डोर. ठीक है, I'm gonna pick a point. I'm gonna choose the middle. Okay, and I'm gonna click OK. ठीक है, so यहाँ पे मेरा ये हो गया है ready. और इसी चीज़ को हम क्या करते हैं? As according to our picture, it is opening in upward direction. So हम इसे rotate करते हैं first. ठीक है, और यहाँ पे I'm gonna choose the end point. I'm gonna rotate it, and now I'm gonna move this. यहाँ से हम मूव करते हैं. ठीक है, F8 में बंद कर दूंगी. ओके, एंड देन गोना अटैच इट राइट अवे. ठीक है, इस तरह से हमने अटैच कर दिया. अब यहाँ पर यू कैन सिंपली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इट अप टिल हियर, एंड यहाँ पर मैं ये लाइंस को भी एक्सटेंड कर दूंगी ऑन द अदर साइड. ठीक है, इस तरह से हमारा ये एक्सटेंड हो गया, एंड यू हैव द डोर दैट इज परफेक्टली created. Okay, so this is how you actually create a double door for your balcony. In our next section, I will teach you how to create windows for your plan. Do share my videos. Okay, I hope you have loved watching my video, and I hope you have learned how to create a double door for your plan. Stay tuned up till the next video, because my next section में आपको मैं windows कैसे बनाते हैं मैं वो दिखाऊंगी आपको. And I hope you have loved watching my video. Do like my video, share it with your friends, and do subscribe my channel. Up till then, take care and bye.